ये है CSS 1999। ठीक है। अब मैं बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें करेक्शन ऑफ एरर में इस तरह भी आ जाता है। तो ये बड़ी ही अहम है ये बात, क्योंकि जब आप 3000 वर्ड्स का ऐसे लिखेंगे, ठीक है, तो उस 3000 वर्ड्स में आपको ग्रामर से वास्ता पड़ेगा। तो ये सिर्फ 10 नंबर का ही करेक्शन ऑफ एरर नहीं है, ये आपको हेल्प करेगा CSS पेपर में जो आपने ऐसे लिखना है 3000 वर्ड का, उसमें ये आपको हेल्प करेगा। जो CSS का पेपर है उसमें आपने देखना है कि आपकी ग्रामर कैसी है, आपकी वो कैप कैसी है, आपका मिडल, आपका बिगिनिंग मिडल एंड कैसा है, और हाउ यू ट्राई टू कंस्ट्रक्ट आई मीन दैट ऑफ योर होल ऐसे। तो उसके लिए ग्रामर जो है वो वाइटल रोल अदा करती है। तो अगर आपकी ग्रामर वीक है तो आपके लिए ये पेपर जो है ना 3000 वर्ड का, ये करना मुश्किल हो जाएगा। तो इससे पहले कि हम इसको करें, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। इफ़ यू सब्सक्राइब दिस आई मीन आउट ऑफ द पेपर, then definitely it will try to improve, encourage me and things like that. तो चले हम इसको करते हैं। Rewrite the following passage after correcting its grammatical error. ग्रामेटिकल एरर जब आप, मैं इसको इस ज़मन में कहूँगा, जब आप CSS का पेपर जो जब आप देते हैं तो ऐसे राइटिंग जो आपका 3000 का वर्ड्स है, ठीक है, उसमें इसी तरह की अगर आपकी ग्रामर आएगी तो आपके लिए बसा बनेगा। तो इसलिए आपको ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको अच्छी तरह देखें। तो ये हम शुरू करते हैं। द वर्ड इज़ पॉइज्ड ऑन ए डेंजरस एंड इनस्टेबल बैलेंस। अब इसमें दो एरर हैं। द वर्ड इज़ पॉइज्ड टू, टू ऑन की जगह टू आएगा, ये प्रपोजिशन यहाँ पर ऑन गलत है। और इसके बाद एंड इनस्टेबल, इनस्टेबल कोई वर्ड नहीं होता, ये होगा अनस्टेबल बैलेंस। ठीक हो गया। और अगला है ऑफ टेरर, फुल स्टॉप। अनलाइक द वार्स ऑफ पास्ट, अनलाइक द वार ऑफ पास्ट, ठीक है। फ्यूचर वार थ्रेटन टू डू अवे, टू डू अवे। अब यहाँ पर प्रपोजिशन आएगी डू अवे विद द ह्यूमन रेस। इज दैट क्लियर? और अगला है, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, यानी टू डू अवे विद द रेस, द ह्यूमन रेस, टू डू अवे विद द ह्यूमन रेस। और अगला है, फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड डिपेंड्स, डिपेंड्स, फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड डिपेंड्स ऑन पीस। यहाँ तक ये ठीक है, यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। इज दैट क्लियर? अब अगला है, फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड डिपेंड्स ऑन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन पीस। ठीक हो गया। अब अगला है, विदाउट इट कॉमा काउंटलेस मिलियंस वुड बी वाइप्ड। अब ये यहाँ पर है वाइप्ड ऑफ, ओ एफ ऑफ, यह आएगा वाइप्ड ओ डब्ल्यू एफ ऑफ, वाइप्ड ऑफ, ठीक है, द फेस ऑफ द अर्थ। दिस फियर हैड, दिस फियर हैड, इज दैट क्लियर? This fear had manifested itself in a persistent, in a persistent demand for disarmament.
ठीक है, यहाँ तक जो सही है. टोटल एंड यूनिवर्सल, फुल स्टॉप. It is indeed, it is indeed, comma, a sad reflection, a sad reflection of आएगा यहाँ पर. Sad reflection on की जगह of आएगा. Reflection of human nature, ठीक है. Human nature that while he sings in praise of, while he sings in praise of, about नहीं आएगा, of the virtue, virtue of peace. Is that clear? Virtue of peace. They continued march on a suicidal course of war. Full stop. In spite of 40 years, 40-year negotiation, in spite of 40-year negotiation, the giants did not even scrap. यहाँ पर है तो ये did not तो हम लगाएंगे present form. Did not even scrapped नहीं आएगा. The tips of the iceberg. तो ये था हमारा CSS पेपर 1999. अब इस रिमन में एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि पर्टिकुलरली आई एम ट्राइंग टू डायरेक्ट CSS स्टूडेंट. जब वो कमरा इम्तहान में जाते हैं तो उन्हें नीड होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप पर डिपेंड करें, ठीक है. और इसके लिए एक बहुत अहम बात है कि कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत अहम बात है. इफ़ योर कम्युनिकेशन स्किल इज़ कॉम्पिटेंट then definitely you can give lot of, that of a respect over there. You will get a lot of success and things like that. Is the one way I would like to give you the example. There are two kind of student. One, the topper and the man of distinction. Other, an average. A topper, a man of distinction. For instance, when he goes for a interview in front of CSS interviewer, he cannot express his subject of specialization and the rest of the question when they try to ask him. Whereas on the other hand, an average student, if he has a lot of grip over communication skill, he can perform better. So I am of the opinion, if you want to be successful in the interview of CSS exam, then definitely one thing is obvious, that you should try to improve your communication skill. In spite of the fact that you are a topper, you are a man of distinction, but even then you cannot get good marks and you cannot give good impression to the examiner. So communication skills play one of the most important role. In spite of the fact that a student of topper and man of that of distinction in all subjects, but he cannot communicate over here properly. It is because of the fact one thing is obvious, that he doesn't have any grip over communication skill. An average student who has great grip over that of some communication skill, then he can get good marks. He can impress that of the interviewer. So communication skill for CSS exam is one of the most important thing. So I am trying to give you the tips for the examination. You should be very serious when you are trying to appear in the CSS exam. So CSS exam, nothing
but your communication skill. If you cannot communicate properly, then there is a problem. In spite of the fact that you are a topper, in spite of the fact that you are a man of distinction, but if you cannot impress, if you cannot express, with the help of your own language, if you cannot impress them, or if you cannot communicate properly, then there is a problem. So try to improve your, communication skill. So this is a tip from me. So rest of the other we will try to discuss. In the end, I am of the opinion subscribe by that of the paper.